Yes, Assalamu alaikum everyone. My name is Sarwat N Shah and I'm the MD of Zaamin Builders and a passionate advocate of women's rights and women empowerment. My initiative, Nisa Block, Zaamin Town, has been a groundbreaking initiative to promote women empowerment at the pinnacle, but from the grassroots level, alhamdulillah, by making property ownership accessible to women. Today, I'm aiming to highlight the thoughts, ideas, and success factors of some amazing women in the real estate industry of Pakistan, breaking the bias and paving the path for fellow women. यहाँ पे भी बात हो रही है गैप्स की एजुकेशन एंड इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है फाइनेंशियल लिटरेसी के गैप की इसी तरह जेंडर पैरिटी रोल्स में भी बहुत ज़्यादा गैप है एंड दैट इज़ वाई वी आर हेयर थैंक यू लैंड ट्रैक एंड थैंक यू प्रॉपटेक फॉर मेकिंग दिस पैनल अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. So my first question today is from Ms. Rashida Soni, and okay, so I want to ask you, like, what are the myths that have kept women away from the real estate sector all these years, and what advantages do you have as an engineer in this field? Assalamu alaikum. Okay, so your question has two parts. The first is about the myths. Real estate sector itself has always been regarded. मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूँगी कि it has always been considered as a very male oriented industry. अब अभी तक जितने भी पैनलिस्ट भी आए, कल भी आए थे, परसों भी, सो अभी तक इत्तफाकन ये है कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे दैट द विमेन हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन, और आई डोंट नो पहले कोई पैनलिस्ट वगैरह भी थी या नहीं, लेकिन आप देखें ना, दिस इज़ द बिग कॉन्ट्रास्ट कि व्हाट इज़ द परसेंटेज एंड रेशियो ऑफ द विमेन प्रेजेंट इन द रियल स्टेट सेक्टर. अब इस रियल स्टेट सेक्टर के जो सेगमेंट्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि फाइनेंस भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, वैल्यूएशन भी है, उसमें बैंकिंग भी है, उसमें फिर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है. उन तमाम चीज़ों को इनकम्पास करते हुए विमेन का तो ओरिएंटेशन कुछ समझ ही नहीं आता. विमेन को मेरा ख्याल है कि पज़ल का वो हिस्सा है जो कि जहाँ पर भी चाहे ना वो फिट कर सकते हैं, बिकॉज वो मल्टीटास्कर होती हैं ना. तो दिस इज़, और ख़ास तौर पर एंड उसका ये है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहते हुए द चैलेंजेस विमेन फेस इन जनरल, और फिर मैं चारों सूबों की बात करूँगी, चारों सूबों की ही जो विमेन हैं उन लोगों की मैं बात करूँगी कि वो हमारा जो 60 to 70% पीपल आर कमिंग फ्रॉम आर स्टिल रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज़. तो उन रूरल एरियाज़ के अंदर जाके देखें और फिर उसको रियल स्टेट से आप कंपेयर करें तो फिर ये मिथ है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कम अप विथ कि चूँकि एक विमेन का रोल घर बनाने का होता है, तो घर बनाने में विमेन से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बेहतर रोल किसी का नहीं हो सकता. Very well said. Very well said. चाहे वो लैंड के एक्विजिशन से ही क्यों ना शुरू हो रहा हो कि कौन सी जगह बेहतर है, कहाँ से हवा अच्छी आएगी, उसको किस तरह से संवारा जाए, बाथरूम का दरवाज़ा किस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विमेन से रिलेट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विमेन का कोई ख़ास रोल ही नहीं है. सो इट इज़, थैंक यू वेरी मच. आई मीन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मज़ीद आगे भी हम बात करेंगे. दूसरा एक जो आपका सवाल का हिस्सा है, बीइंग एन इंजीनियर, वो एक बिल्कुल ही सेपरेट दास्तान है. बीइंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज भी आफ्टर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स, स्पेंडिंग 25 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, किसी को भी मैं बताती हूँ, अच्छा आप क्या काम करती हैं, इंजीनियर लड़की, पहला तो रिएक्शन ही आता है. दूसरा रिएक्शन ये आता है कि अच्छा अगर इंजीनियर भी है तो आर्किटेक्ट होंगे. अच्छा, एक तो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर फ़र्क बताना भी एक डिलेमा है यहाँ पर पाकिस्तान में. अगर वो समझा भी दिया जाए उसके बाद अच्छा फिर ऑफिस जॉब होगी. पीपल अज्यूम, वी डू नॉट हैव द एक्सेप्टेंस कि विमेन भी
बहुत ही एक ऐसा रोल प्ले कर सकती हैं कि साइट के ऊपर लेबर को संभालना, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, हर चीज़, और फिर आखिर में आके ये सारी चीज़ें इनकम्पास हो जाती हैं रियल स्टेट में, क्योंकि ये रियल स्टेट से ही निकल कंस्ट्रक्शन इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ रियल स्टेट ना, सब्सिडाइज इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल जी। Of course, I can relate to that, Rashida, because मैं जब लोगों को बताती हूँ कि आई एम द एमडी ऑफ द कंपनी, तो वो कहते हैं ऑफिस तो नहीं जाती होंगी, घर से ही चलाती होंगी. So you know, these are myths, of course, and these need to be busted, and platforms like these are busting these myths. कि these women are real and they're in the real estate industry and they're making a difference. You know, taking it forward, I would like to, you know, क्योंकि myth की बात हो रही है, I would like to ask Madiha that how rewarding has the shift from corporate career to real estate been, and would you recommend this to other women? क्योंकि आपका ताल्लुक दूसरे शोबों से भी रहा है, तो आप वो जो myth है उस myth busting कीजिए हमारे लिए. Sarwat, Marium. Yeah, this is Marium. So yes, my shift was actually a different kind of a shift because I worked with corporate sectors, different industries, and then, you know, finally by sheer luck, I will say, I landed into property. But by far that was my best decision. Why I'm saying that, because a shift, यानी मैंने अगर एक corporate sector से shift किया real estate की तरफ, तो ना ही सिर्फ मैंने एक financial growth देखी, but I since I've joined property. Because when I joined property, and what I saw was it's a completely male oriented and male dominated sector. But what happened is that the response that I got initially from the people and everybody was, या तुम लड़की हो सेल्स में, वो भी रियल स्टेट सेल्स, आपसे ना हो पाएगा. दैट आपसे ना हो पाएगा actually intrigued me, like I have to do this thing. एंड वंस यू नो मतलब हम यहाँ बैठे हैं अपनी कंपनी लेके, इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहे हैं, लोगों को लगता है कि यार कंपनी के ओनर है, बड़े आसानी से बन गई, यू नो मियाँ का पैसा होगा एंड ऑल दैट, यू नो पीपल परसीव जस्ट लाइक रशीदा सेड, बट इट वॉज नॉट ईजी. ट्रस्ट मी, मेल डोमिनेटेड सेक्टर में अपने आप को मनवाना was not easy. People did not take you very, very seriously, that this is not her bread and butter. She's just doing it for the sake of, you know, a new career. But I wanted to prove that I'm not doing it just for, you know, an enjoyment or a change of my career. I'm here to actually pave ways for other women to come into this industry, because internationally, the real estate agents, 70% are females. In only Pakistan, we have a ratio of like very, you know, few women coming in. अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आज से 8 years back की, तो ठीक है, चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट थी, डिफरेंट थी, बट यू नो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, वी वुमेन, तो वी कैन ब्रिंग अ चेंज. और ये चेंज मैं लाई हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस, बिकॉज यू नो होता क्या है, आपको एम्पावर करना पड़ता है. आप अगले लोग को सिखाएं जो आपके साथ हुआ है, यू शुड टेल देम हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, एंड देन एक्सेप्टेंस आ जाती है. And trust me, I was lucky enough to be working with international developers, John, they actually, you know, gave me that platform and environment where I can actually invite more women into this. Right now, if I talk about 8 years down the line, I see a big change. This real estate sector, since 5 years, if you notice, there has been a transformation. पूरी एक transformation हुई है जो हम देख रहे हैं. मतलब be it tech, be it anything, people are now coming towards this. In fact, the fresh graduates, they were thinking कि real estate तो जो है बस ऐसा है कि गली में broker की दुकान खोल के बैठ गए और property बेच रहे हैं. But the fresh graduates now don't know that they have a career in this. So you know, when I switched and when I saw all these things, the adrenaline rush जो मिलता है आपको, एक आपकी empowerment, वो बहुत ज़रूरी है. और हमारी आज की जो औरत है वो बहुत empowered है. आपने देखा है कि कोविड में जो लोग नहीं काम करती थी, जो औरतें नहीं काम करती थी, उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दिया एंड दे सपोर्टेड देयर फैमिलीज मोर देन मेन कुड. उसके बाद ये रियलाइजेशन आ गई औरतों में कि वो घर से निकल के काम कर सकती हैं और घर बैठ के भी कर सकती हैं. अच्छा, रियल एस्टेट का एक एज है हमें कि वी एज फीमेल्स हैव दिस वर्क आवर्स की फ्लक्चुएशन है. वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दोज वर्क आवर्स कि हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बिकॉज व्यूइंग्स करा सकते हैं. यू नो, बीइंग इनटू सेल्स, आई टॉक अबाउट सेल्स ओनली बिकॉज देन आई विल नॉट कवर एनी अदर एस्पेक्ट.
हम औरतों को आना चाहिए, ट्रस्ट मी, बिकॉज लाइक रशीदा टोल्ड एवरीबडी कि जो हमारी नेगोशिएशन स्किल्स हैं या जो हमारा एक औरत का पर्सपेक्टिव है इन सेलिंग अ हाउस और सेलिंग अ प्रॉपर्टी और सेलिंग एन इन्वेस्टमेंट इज फार मोर, you know, better. I mean, not say better, but it's more, vast. It's more vast. We can give more options to the clients, to our buyers. And, we women actually think from the heart. We have this empathy thing, which is very important when you're making a complex decision like buying a home. So, udhar se I say that it has been a personal growth as well as a financial. अच्छा पैसा तो है ही. I mean, anybody who's listening, पैसा बहुत है रियल एस्टेट में अगर आप राइट प्रोडक्ट और राइट चीज़ पे काम करते हैं. मेक श्योर आप एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में, जैसे मिस्टर आरिफ सेड कि यू शुड हैव अ ब्रॉडर विजन ऑफ थिंग्स. यू शुड नॉट से एक महीने में, 2 महीने में. यू शुड हैव परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू आर कमिंग इन रियल एस्टेट सेल्स. एंड यू शुड हैव somebody to mentor you, somebody to guide you and tell you, I learned from my mistakes, I made mistakes, I did it, and I had few mentors which I always, wherever I'm telling about real estate, I honor them because I've learned from them. So it's not like, you cannot learn from people. Acceptance is very important. And women are bringing a new perspective in real estate sales, Yes, of and I'm course. super happy and proud of that. And that men can also learn from, of course. Men can learn from it, definitely. That brings me to my question to Samar, that your practice as a real estate broker in the US, what difference do you see in the regulated and relatively unregulated market, and especially from the perspective of a real estate service provider and from the perspective of buyer confidence? वेल अगर आप पाकिस्तान और यूएस के उसकी बात करती हैं तो पाकिस्तान में जब मैं थी तो हम घर ले रहे थे तो आई वाज लाइक अच्छा रियल स्टेट रियल्टर को कांटेक्ट करते हैं एंड देन सडनली द रियल स्टेट एजेंट इज कमिंग इन ऑन अ बाइक विद अ पान इन हिज माउथ लाइक ओके मतलब उस टाइम पे मैं सोच नहीं सकती थी कि आई विल एंटर इनटू द रियल स्टेट इंडस्ट्री. तो जब मैं यूएस गई तो स्टिल मुझे 2 साल लगे टू गेट द मेंटोरिंग डन कि भाई अच्छा मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाना है. तो उधर के ही मेंटोर से मैंने उनके अंडर में 2 साल निकाले एंड देन आई ऑप्टेड फॉर द रियल एस्टेट करियर. So regulation definitely that's heavily regulated over there locally federal level दोनों पे that's heavily regulated कि मतलब आप agents बनने से लेकर जो regulations हैं अगर आप उसको देखेंगे अच्छा भाई आपने स्कूल एग्जाम पास करना है देन आपने स्टेट एग्जाम पास करना है एंड देन आपने लाइसेंस लेना है और उससे पहले आपको ब्रोकर इंडोर्समेंट चाहिए एंड देन द ब्रोकर एसोसिएशन अच्छा भी फिर ब्रोकरेज आपको कॉल कर रही है एंड दे आर आस्किंग कि भाई आप हमें ज्वाइन करें आप हमें ज्वाइन करें. तो इट्स लाइक अच्छा भाई उनके पास कौन सी ट्रेनिंग्स हैं उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स कैसी हैं उनके मॉड्यूल्स कैसे हैं और वो क्या आपको प्रोवाइड कर रही है. तो मुझे उसमें बहुत टाइम लगा टू गेट इनटू प्रॉपर ब्रोकरेज. तो अब जो मैंने ब्रोकरेज ज्वाइन की है डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट और मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज क्योंकि उनकी जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स हैं दे वर्क विद द इन्वेस्टर्स. मैंने जब ज्वाइन किया तो अभी इस वक्त जो मेरा मोटिव है टू वर्क विद द इन्वेस्टर्स मोस्टली रादर देन बाइंग सेलिंग दो आई डू दैट टू. लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ काम करने का एक डिफरेंट एक्सपोजर है डिफरेंट सब चीज़ें हैं. तो रेगुलेशंस डेफिनेटली हैं यहाँ की जितना मैंने लोगों से सुना रेगुलेशंस मुझे समझ में आई कि अच्छा भाई कौन सी चीज़ रेगुलेटेड है कौन सी नहीं है. बट वहाँ पे इट्स वेरी ईजियर बिकॉज एवरीथिंग इज सो मच रेगुलेटेड कि अच्छा इस स्टेप पे ये है ये स्टेप है ये स्टेप है. इट्स लाइक स्टेप्स आर टोटली डिफाइंड कि आपने क्लाइंट से डील करना है एंड देन उसको क्या प्रोवाइड करना है फिर अटॉर्नी रिव्यूज एंड एवरीथिंग इट्स लाइक टोटली कॉन्ट्रैक्ट्स एवरीथिंग इज वेल एंड हेवीली रेगुलेटेड. तो आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आती. It's an ambitious decision of yours because working with an investors gets you more money also. Exactly. So, that's how ये भी एक myth है कि खवातीन नहीं सोचती इन चीज़ों के बारे में कि profits क्या होंगे या कमाने की उनकी ambition नहीं होती. So ये चीज़ भी break करने की ज़रूरत है कि why not, why would a woman still Why can't we think definitely? Why can't we think about matlab profits? But we should actually. Great.
So that takes me to Nilofer. Nilofer, आप भी sales में हैं, and you also have a background of corporate career. So how is the general public responding to women real estate? What do you think needs to change to provide women more room to explore this field? Okay. Assalamu alaikum, everyone. My thought of coming to property was I basically come from the aviation and the travel industry, and I've spent over 3 decades into the aviation. I worked in most places in the world and had the opportunity, and I love Pakistan, so I decided to live here. But before I started, this was in COVID days, and I moved out of the Aga Khan University as a head of travel. I decided to do a theoretical work in a sense of diploma or a certificate before I personally go into the practical scenario. So I understand कि मुझे समझ में आए कि ये इंडस्ट्री क्या है और इसको काम कैसे किया जाता है. And fortunately found a good guru, and we were 35 students, and I think that was one of the first batches they had. It was in phase 2, and did the 4 months training, and then slowly and gradually I started freelancing because I was not so strong to open my own office or go and work for a company and do a 9 to 6 job. I wasn't interested in all that. So I started freelancing, and I saw the positive result that was coming in. What I feel today, women do have respect, and there are a few things that I've noticed during the past few years since I started is one is you got to make sure that you do get respect wherever you are working. The other is your communication skills, very important. Your grooming, your negotiation skills, बहुत ज़रूरी है. Or your understanding of what the property you are selling, buying, renting, who are you dealing with, who's your audience. Till today, I feel that women are very much interested because iske timings are very flexible, so we're very, very comfortable. We do a lot of online marketing. We do communicate with our customers in Pakistan and overseas, and obviously WhatsApp has done a great work for that. And so it's easier to communicate and then eventually do a survey of the house that's being sold or buying or whatever, and then show it to a few clients that are interested. And like Marium, I also started in the similar pattern with her, with the overseas company here, big corporate based in phase 8. And then we were colleagues in the same company, and then we moved into our own businesses. मैं समझती हूँ कि there is a lot of possibility if women are interested and are serious about it. We do have a women group, but we don't see much happening. But and I'm sure my other colleagues are interested to take this real estate work of women into a higher level. And IBA can certainly play a very important role. I was supposed to join them in the last batch, but I couldn't because I was out of town. But inshallah, in January, I'm going to encourage many women who are in big groups and also in the real estate to be a part, so that aapko jab theory pata hoti, the practical is easier. But it is certainly an acceptable job or a business to do, and is how you manage a business that is important. Of course. Thank you very much for shedding light on that. So is Kritika online with us? Can I ask her a question? Yeah, I am sorry for the delay. There was a bit of a technology glitch, I think. I hope you guys can hear me. I'm not able to see anyone. Yes, we can hear you. Can you hear us? Yeah, I can. Yeah. All right. So Kritika, we'll go ahead with the question while the technical team tries to fix the video. So while we talk about technology, my question to you is also about technology. So do you believe that landscape for women in real estate technology has evolved since you founded Realty NXT? So since I founded Realty NXT, I started in 2020. So I would say, of course, it has evolved, and there has not been a stereotype of the role, right? Earlier, women was looked into a certain role when it comes to real estate industry, which was only limited to marketing. When I started Realty NXT, I got to meet a lot of
prop tech startups, lot of real estate technology startups where the co-founder was women. And the limitation of the role was not just the marketing. They were the trailblazers. They were creating. They were the coders. They were also the finance heads. So my point of saying this is in technology field as such, we used to always have this stereotype of a notion when it comes to women roles, but that has changed drastically over the time that we are noticing even in Indian real estate market when it comes to prop tech, con tech, or even clean tech. So in all these technology, women are the leaders. Women are creating solutions which are helping not just the real estate developers but also the customers. So of course, the narration, the narrative when it comes to the roles has changed over the time, especially in real estate. All right, great. So for the information of our audience, I would like to tell you that Kritika has joined us from India, and she has a platform of her own called Realty NXT. So Yeah. back to you, Kritika. My next question is from Rashida. Rashida, what are the untapped opportunities available for women in the real estate sector that you feel? Thank you very much for this I'm question. sorry. Yes, as Kritika said, and as most of my peers, real estate sector, when where the female it is rather considered the marketing and sales portion is actually रिलेटेड विद द फीमेल. अच्छा, अगर रियल स्टेट में फीमेल का कुछ रोल हो सकता है तो सेल्स एंड मार्केटिंग. अच्छा, जैसा कि उन्होंने समर ने बताया, वो भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर करते हैं ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में पूरा का पूरा रियल स्टेट सेक्टर में से 70% के ऊपर इज डोमिनेटेड बाय फीमेल. एंड वी आर नॉट एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग एंड सेल्स. Female are entwined into this whole system since the acquisition of land. जैसा कि मैंने अपने पहले उसमें बताया था कि एक्विजिशन ऑफ लैंड से कि कौन सी लैंड कहाँ पर उसका डेमोग्राफिक्स फॉर एग्जांपल क्या है और कितना फुटफॉल वो लेके आएगा, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स. जैसे वो एजाज साहब ने कहा था कि रियल स्टेट तो हर चीज़ है ना, कमर्शियल भी रियल स्टेट है और रेजिडेंशियल. अच्छा, अभी जितनी भी डिस्कशन हुई है इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट हाउसेस, कि वो घर कैसे पसंद किया जाता है. लेकिन इंडस्ट्री कहाँ लगानी है, लॉजिस्टिक्स कहाँ से आसान रहेंगे. जैसे आप गंदम की फसल भी लगाएं बेशक, उस गंदम को आप स्टोर कहाँ करेंगे, फॉर डैट ऑल्सो यू रिक्वायर रियल स्टेट. तो हर चीज़ के अंदर रियल स्टेट है. और उसमें फिर वो ये जो आपका मेन पार्ट है क्वेश्चन का कि दीज आर द एवेन्यूज़ जहाँ पर एक तो विमेन का रोल इज़ लाइक यू नो इट कैन बी कंसिडर्ड वाइटल, बी इट फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ द अगेन द मल्टीटास्किंग थिंग, और वो जो रैशनल है, एक माइंडसेट है फीमेल होने का, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फीमेल होने का. येस, आई टेक इट एज माई स्ट्रेंथ बीइंग अ फीमेल. तो वो चीज़ यूटिलाइज करना मतलब रियल स्टेट मार्केट के अंदर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ ग्रेट अचीवमेंट. दूसरी बात ये है कि जो नीलोफर ने भी, मेरे ख्याल है नीलोफर ने जो पॉइंट उठाया है, दैट इज़ पॉइंट टू पॉन्डर कि दिस इज़ द एवर मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट प्लेटफॉर्म जिसमें हमें ये एक चांस मिला है इस तरह की गैदरिंग का. इसको हमें लाजमी तौर पर आगे ले जाके, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवन नॉट टू डिमीन द सेल्स एंड मार्केटिंग थिंग एज वेल, लेकिन आज के कन्वेंशनल बिल्डर्स की अगर आप बात करें ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड, नॉट टू से दैट आई मीन Iqbal Qureshi साहब हैज़ बीन अ मेंटोर फॉर मी थ्रू एंड थ्रू. ही इज़ द रीज़न वाई आई एम सिटिंग हियर. जितना भी मैंने सीखा है अभी तक,
एक ऐसा बाहर इतने सारे बिल्डर्स बैठे हुए हैं, उनके पास भी ख़वातीन हैं, कोई भी चीज़ सेल करने के लिए, और रियल स्टेट इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर रही हूँ, उसमें ख़वातीन का जो फिगर है ना, वो यूज़ किया जाता है एज अ शो पीस. I have like serious problem with that. Women are not show pieces. Women are doers, executors. तो उसको उस हिसाब से आप रिस्पेक्ट भी दें. और मुझे लगता है, मैं अपनी सेल्स टीम को जब भी गाइडेंस देती हूँ, द फर्स्ट थिंग आई से इज़ नो योर प्रोडक्ट. आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, एंड रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट. अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिंग योर प्रोडक्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्व्स. कि आपको पहले अपनी इज्जत भी करनी है और अपने प्रोडक्ट की इज्जत करवानी है. व्हेन यू आर श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग, यू आर नॉट सेलिंग सम शाही सुपारी. आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई रियल स्टेट सेक्टर इज अ सीरियस बिजनेस which always involves big amount of money. उसमें फिर आप जो भी बात करें, उसके अंदर वज़न होना चाहिए, उसमें आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए. उस बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ पर भी उन ख़वातीन को एक साथ मेरे ख्याल है यकजा करने की ज़रूरत है कि फाइनेंस में से भी कौन कितनी ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, नॉट जॉइनिंग हैंड्स. जॉइनिंग हैंड्स की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है. वो एक अनटैप्ड फीचर है. थैंक यू. I completely agree with you, and this change will come with women in C roles जो companies में. I also feel कि क्योंकि मैं कंपनी में C level position पे हूँ, तो हमारे यहाँ हर level पे ख़वातीन अब हैं. और not only the company policy is like that because of a person being in the top tier, but also acceptance of girls coming into the field has changed because of that. तो जब ख़वातीन C level positions पे होती हैं, तो ख़वातीन दूसरी ख़वातीन सेफ और सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करती हैं उस बिज़नेस में आने में. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग कि ये चीज़ यहाँ पे लोगों को पता चल रही है, एंड इट इज़ बीइंग फीचर्ड. So coming to Mariam, how do you think women can contribute further, and what change do women require to thrive in this industry? Well, again, I will say that women can contribute once they are self-aware about the sales, about the marketing, about the finances, about the actual real estate is. What, can you guys hear me? It's okay? Yeah. देखिए, सारी शुरुआत तो हमसे ही है. हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हमने लाए कि हमें रियल एस्टेट करना है, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, और हमने अगर उसमें एक जंप किया है तो हम वो अपने आप को मनवा लेंगे. ये तो हमें पता है. हम औरतें अगर किसी चीज़ में अगर एंटर होती हैं तो हमें अपने आप को मनवाना आता है. अब मनवाने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे ऑल द मेन सपोर्ट ईच अदर. यू सी दैट, एंड वी हैव सीन इट ऑलवेज कि मेन सपोर्ट मेन एट ऑल लेवल्स. इसी तरह से वी वुमेन हैव टू सपोर्ट ईच अदर. Just like Nilofer said, just like Rashida mentioned, we should have these conventions. We should have courses, that like IB is offering a courses. We should be, we as seniors who are in this industry, we should provide platforms for them. Then only can be a change can be brought. Honestly speaking, the change has started. The change has already begun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Because I can see that like we sitting over here is actually a proof that the change has started. We have actually started the change, and on this day and this time we can always pledge to take it forward and spread this word and invite more of the women, maybe the fresh graduates who are coming in, maybe the people who have lost their jobs, women who have nothing to do, they can come, sit with us, learn from us. We can create groups for them where we can guide them from our own experiences, that how they can make money and how they can benefit their families. Another thing that I would definitely like to add here, which is very, very important, is that Sarwat, we are blessed, I guess, that we found very good mentors, very good developers, international developers that we worked with. The men who accepted us and who accepted that women should be doing it. But there are so many people out there and so many conventional developers out there who are not actually, and this, I'm sorry, but this has to be said, who do not treat women as equal as men in their offices. You need to understand that if a woman is coming out of house, just like Rashida mentioned, she's not coming out for a display of your property or something like that, or somebody who can just sit and smile and greet your clients. She has the potential
to bring business to you. So please, make spaces for the women in your companies. And I'm talking about the people not on that side of the bridge. हम कहते हैं ना, this side of the bridge and that side of the bridge. That side of the bridge में तो बहुत जो है वो एक समझ आ गई है, and they're actually welcoming women. But other side of the bridge फिर भी जो है वो औरत को एक display ही, I'm sorry, treat कर रहे हैं. तो let's actually begin the change right here, right now, because accept the women that they are going to make a change and they are going to grow your business more. This is what I like to say. Good one. Thank you, Madhya. Thank you. I think it's more of a mental bridge that needs to be bridged. Okay, so coming to Samar, from this point, what can we learn from other countries to make this a safe and prosperous career option for women in Pakistan? Well, अगर मैं यूएस की बात करती हूँ तो देखिए, सिक्योरिटी का जहाँ तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ताल्लुक है, वहाँ की अपनी ड्रॉबैक्स हैं, वहाँ पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वुमेन रियल्टर्स को. और यहाँ पे आई गेस थोड़ा हमें हर लेवल पे थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है. वहाँ पे कम है बट स्टिल देयर आर इश्यूज़, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को और बेहतर बनाया जा रहा है, मतलब थ्रू एजुकेशन. सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छी मतलब इसी फील्ड की एजुकेशन को स्प्रेड करना. जैसे मरियम ने कहा, रशीदा ने कहा, मतलब हमें एज वुमेन भी एक दूसरे की सपोर्ट में आना पड़ेगा. प्रॉपर एजुकेशन टू द एजेंट्स, क्रिएटिंग अ रियल्टर इन प्रोसेस, मतलब वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं. द मोर वी नो, द मोर एजुकेटेड वी आर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट विल बी मोर सिक्योर एंड सेफ फॉर वुमेन. Right, great. So luckily I'm, drafting making the draft of the Realtors Council of Pakistan. So I'll get in touch with you for how we can make it better for women. Sure. In the real estate. So coming to Nilofer, do you see SDG goal number 5 is gender parity? So what do you think is the career path? What is the career path for women when she decides to choose the real estate marketing or agency business? Okay. To me, most important thing is the education, whether it comes in a form of a certificate, diploma, and time to come, master's graduation. We do not have at the moment any university teaching real estate or the subjects on real estate. Whatever we have learned, and I'm sure most of us have done it, is through digital, and some are practical, and there are hardly any classes. IVA was, I think, started, this is their first batch that they've started, and probably going into second one. Panjwani Saab maybe has contributed a lot. PIMSAT has contributed, SUFA has contributed, but these are all been certificate and diploma courses. I feel it should be a long-term process. The government should get involved and give us a procedure so that every one of us has a license to deal with the real estate as it is in Dubai and other parts of the world, in the USA and any other country for that matter. So if women even want to move to another country, can go and work there. Today, we Pakistanis, whether be a doctor, whether be a real estate, or whether be anything else, we can't just go and work in the United States without having the proper license. So I think that particular area has to be looked at seriously. If not the government, the big guys in the market, Arif Habib can certainly do a good job on that. The prop tech can get involved, and there is a lot of opportunity that can come through in the real estate for women to be a part of it. But basic knowledge has to be there, and I think that can take us, all of us actually, to the second tier of it. And I personally think, being in this part of the property, it's become a passion over the time, and I think I've forgotten the travel. And similarly, many women are into it, doing a lot of digital work, marketing through, and there are influencers, there are bloggers, there are YouTubers, there are so many TikTokers. And so there is an opportunity in real estate, and our women can not only just work in Karachi, Pakistan, but can also work with overseas partners if they build one. Wonderful. Thank you very much, Nilofer. So that brings me to Kritika. So if you could tell us any real estate education or visible career path in India, if not, what is missing in, and how this gap can be filled?
Could you just repeat the last part? I couldn't hear you. I'm sorry. Is there a visible career path or educational path in India? So if you're talking about any courses available to women, a diploma or a certificate or a more, organized structure of education for women in real estate, for that matter, anything in real estate. So yes, definitely. I'm quite surprised. Pakistan doesn't have. In India, we have a lot of institutes where real estate courses are given, not just in diploma manner, also in degree, where they are taught about the real estate in terms of marketing, in terms of finance, and it's all the classes usually are taken by the industry experts. So just to quote one, there is a very well-known real estate developer, I'm sure you must have heard of, is Hiranandani. He has his own institute in Bombay, which runs a complete courses in real estate, different verticals from your digital perspective to finance to even how broker mandate business and all of that. Even the classes, there are certain guest lectures and classes which are taken by the real estate experts saying that CEOs of certain branded developers come in. There are prop tech companies coming in to give lectures. So yes, the courses are there in place for everyone, and the real estate courses also helps in getting them placed into the branded developers companies. So they all have tie-up with the known developers, the Godrej, Oberoi. So placements also are in place when it comes to such institutes. So yeah, career pathwise, there are institutes, there are a lot of opportunities, and I have seen a different change also in terms of youngsters in real estate, because as we have seen so many startups coming in from the prop tech point of view, from smart clean tech, smart tech, there are lots and lots of opportunities where we see even youngsters getting into the channel broker, model. So they are showing interest because now the real estate industry in India is quite organized, is quite well structured. So I think gone are the days where it was not structured, gone are the days where real estate was not looked in a good way. But yeah, now the things have quite changed in last, I think, 4 5 years. All right. Thank you very much for shedding light on this. And with this, I think we are really lucky that the educational segment of Mr. Panjwani coincided with our session, and we learned a lot from him. That so much is happening in the field of education also. So we, whenever a woman comes up to us, we can always guide her कि courses भी लिए जा सकते हैं और फिर mentorship भी ली जा सकती है. आपके पास females भी यहाँ पे मौजूद हैं. I think Samar, Kritika, all these, the world is a global village now, and you can reach out to so many women and take inspiration. So I hope that this panel will be an inspiration for women as well as men, and people would open doors for women to explore this field further. With that, thank you very much to the panelists, and thank you very much, PropTech. Thank you so much. Thank you.